तर बघा आजचे जे काही लेक्चर्स आहेत त्यामध्ये आपण मॅलोनिक इस्टर जे आहे मॅलोनिक इस्टरचं सिंथेसिस आपल्याला बघायचं आहे. नाउ वी वांट टू जस्ट सी द सिंथेसिस ऑफ अ मॅलोनिक इस्टर और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ diethyl malonate. So you know the formula of a malonic ester or diethyl malonate? Formula of a malonic ester or diethyl malonate. This is the structure of a malonic ester. This is the structure of a malonic ester. This one is a OC2H5. You can remember this is a OC2H5. Again this also contain OC2H5. That is there twice. This is a C double bond O. This is a C double bond O. This is again a C double bond O. C double bond O. And this is a CH2. Now this is a formula for a malonic ester. Now we want to discuss the synthesis of a malonic ester. Malonic ester is also contain active methylene group because this one is a C double bond O. ये जो है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है. That is this is also carbonyl group and this is also carbonyl group and next to that carbonyl group, now that carbon is alpha carbon. Again this also have a carbonyl group C double bond O and this is also alpha. So this one malonic ester also contain active methylene group similar to that of the ethyl acetate. Now we want to see the synthesis of a malonic ester. ये जो malonic ester है malonic ester का हमें synthesis जो है करने का है. So malonic ester synthesized from potassium cyanoacetate. Potassium cyanoacetate. Now this one is a potassium, this is a potassium, this is a cyano. ये जो group है, now this one is a cyano and this contains 2 carbon, so that's why this is a acetate. So this one is a potassium cyanoacetate. Now अथवा ये देखो यहाँ पे जो cyanide group है, so this one is a cyanide group. So before that you must know the structure of a malonic ester. Malonic ester का structure जो है ये आपको पता है, लेकिन malonic acid का जो structure है वो आपको पता होना चाहिए. Malonic ester or malonic acid. So the structure for a malonic acid is that it is the same. Rather than ester, it contains a COOH group. So this one is a CH2, COOH, COOH. Now this is a structure of a malonic acid. Now first step is that we want to synthesize a malonic acid from a potassium cyanoacetate. ये जो potassium cyanoacetate है, ये देखो ये जो C double O के जो bond है, we want to easily convert into COH. And also cyanide also we want to convert, or we can also convert this cyanide bond, that is a C double bond, C triple bond N bond which is there. Now that is a cyanide group, also we can convert it into COH. So step first is that you can do the hydrolysis. You can do the hydrolysis. So in that hydrolysis, so what happen here in hydrolysis? Now this cyanide group it gets converted into COOH group. ये जो cyanide group है इसका जो conversion है ये COOH group में हो जाता है. If you do the hydrolysis, so it gets converted into first of all C double bond N O. So what is to be there, and which again hydrolysis it gets converted into COOH. And similarly this one is a sodium or potassium salt. So this one is a
potassium salt of acid. Again, it also undergo hydrolysis, and these are converted into, that is nothing but a COOH group. So step first is that you can do the hydrolysis. In hydrolysis, cyanide group converted into COOH group, and this one is a COOK group also gets converted into COOH group. So this one is a malonic acid. See, this is a structure of a malonic acid. Already I have written. This one is a side product. Potassium react with this side product is not much important, but just you can remember this one is also side product which is to be there. As soon as this is a malonic acid is to be formed, as you know, when ester compound, suppose when ester is there, RCOOH. Now this one is a carboxylic acid. When react with alcohol, ROH, what you will get the product? अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट होती है तब क्या मिलता है आपको? एनीवन कैन यू गेस और कैन यू रिप्लाई इन चैट? ईस्टर. ओके, सो हियर यू विल गेट देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ जो है, यहाँ क्या होता है, H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है तो लॉस होता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ईस्टर. सो दिस इज अ already you have discussed at a first year level. Now when this is a malonic acid, this ये जो है ये है तुम्हारा malonic acid है. This malonic acid, ये जो है malonic acid, when this malonic acid react with the alcohol, what happen here? Again there is a loss of a H2O. Again in this case there is a loss of a H2O, and both COOH group, both ये जो दोनों COOH ग्रुप है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों COOH ग्रुप जो है, it gets converted into COOET. ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH ग्रुप जो है ये कन्वर्ट होता है ईस्टर ग्रुप में. So this is nothing but a hydrolysis. Generally hydrolysis is to be done in presence of a dilute HCl. ये जो है यहाँ पे dilute HCl में hydrolysis जो है किया जाता है. If you take a acid, if you take a some quantity of acid and some quantity of a alcohol and you put for a longer time, आपने इसको एक दिन के लिए रखा, 2 दिन के लिए रखा, तो उसमें उसमें जो है esterification नहीं हो जाएगा. अगर आप उसमें हो जाएगा नो डाउट, बट इट रिक्वायर बहुत टाइम लगेगा उसको. बट इफ यू ऐड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ HCl, then esterification process is to be start very easily, that is rapidly, and it undergo esterification reactions. So ये जो है यहाँ पे COH का कन्वर्जन COO C2H5 में हो जाता है. सिमिलरली ये दूसरा जो भी है, so this product, ये जो प्रोडक्ट है आपका ये है तुम्हारा malonic ester, and you will also get a side product. Now that is nothing but a water molecule. I think you will get this point. Now that is nothing but a synthesis of after the synthesis of a malonic ester from potassium cyanoacetate. That is when potassium cyanoacetate react with the HCl in presence of water, it undergoes simple hydrolysis, it gets converted into COOH, and this one is a malonic acid. And this malonic acid react with the alcohol in presence of a dilute HCl. This carboxylic acid group, it gets converted into ester group. So there is a formation of a malonic ester. Now that already we have seen these portions. Now we want to see the synthesis of monoalkyl acetic acid. Synthesis of a monoalkyl acetic acid.
We want to see the synthesis of a monoalkyl acetic acid. Again, step first is a common, similar to that of the what we can say synthesis of a monoalkyl acetic acid from a ethyl acetoacetate. ये जो ethyl acetoacetate जो है उससे जो भी हम प्रिपेयर करते हैं वैसे ही स्टेप्स यहाँ पे सेम स्टेप है, कॉमन स्टेप्स. So what is the step first? Step first is that abstraction of a proton by means of a strong base. ये यहाँ पे देखो, ये जो बेस है यहाँ पे, जो भी बेस है यहाँ पे, ये जो बेस है, now this one is a strong base. Just I will take, there is a marker. Okay. See, this one is a, now this is a strong base, that is a C2H5O minus and Na plus. Now this one is a strong base. ये जो है ये strong base है. ये strong base क्या करता है? यहाँ का जो प्रोटॉन है, now this proton is to be abstracted. Proton means H plus, and at the same step this bond will be goes towards this carbon, and there is a formation of, this is a side product, that is a C2H5OH, C2H5OH, C2H5O और H यहाँ से निकल जाता है, and there is a formation of a CH minus, that is a carb anion of a malonic ester. This is a step first. उसमें जो है हमने स्टेप फर्स्ट जो है वो यही स्टेप फर्स्ट देखी थी. यहाँ पे खाली डिफरेंस जो है, यहाँ पे ईस्टर ग्रुप है दोनों साइड से. वहां पे एक साइड से ईस्टर था और एक साइड से अल्किल ग्रुप था. नाउ दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ओके, नाउ एज सून एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ carb anion of a malonic ester, now that react with the alkyl halide. Again second step, again it is to be common, which is a similar to that of the synthesis of a monoalkyl acetic acid from ethyl acetoacetate. Now again that react with the alkyl halide. ये जो है जैसे यहाँ पे कार्ब एनायन जो तैयार हुआ है, जो फॉर्म हुआ है कार्ब एनायन, so this minus, that is a carb anion which is a form here, now that react with the alkyl halide. ये जो है ये किसके साथ रिएक्ट होता है? अल्किल हाइड के साथ, एंड एट द सेम स्टेज देयर इज अ लॉस ऑफ X. यहाँ पे जो X जो है, X यहाँ से निकल जाता है एज अ X माइनस. सी हियर हमने यहाँ पे जो X जो है, X is to be removed as a X minus, and what you will get, there is a bond formation is to be takes place between this carbon and this alkyl group. यहाँ पे जो कार्बन जो है, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन है और ये जो अल्किल ग्रुप है, इसमें क्या हो जाता है, बॉन्ड जो है तैयार हो जाता है, फॉर्म हो जाता है. सो हियर यू विल गेट सिंपल. नाउ दैट इज नथिंग बट यहाँ पे जो प्रोटॉन है, सी इन दिस ये जो स्टार्टिंग मटेरियल जो है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, सिर्फ ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन निकल जाता है, यहाँ पे माइनस आता है और सेकंड स्टेप में उस प्रोटॉन की जगह R आता है. नाउ दैट इज नथिंग बट alkyl group. So there is a formation of a alkyl derivative of a malonic ester. ये जो है यहाँ पे alkyl derivative तैयार हो जाती है, फॉर्म हो जाती है alkyl derivative of a malonic ester. Now as soon as this alkyl derivative of a malonic ester is to be formed, now which undergo hydrolysis. ये जो है इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है. Now hydrolysis again it is to be carried out in presence of a H plus in presence of water molecule. यहाँ पे जो H2 थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट के जो है ऐसे हमने ऐसा H2O नहीं लिखना चाहिए. We want to return H2O in this state, ऐसा लिखना चाहिए. ओके, बट इट इज अ टेक्निकल इशू. सो विच ये जो है इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं. So which on hydrolysis, this is H and this one is a OH. Similarly, here is also hydrolysis, H and OH.
तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो प्रोडक्ट है, सी दिस वन, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो प्रोडक्ट है, सी दिस वन इज अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर, आर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये जो है ना ये है COOH, ये हमने यहाँ पे लिखा है COOH, ये है तुम्हारा COOH, और ये जो है ये दूसरा COH ग्रुप है। सो दिस वन इज अ, ये जो है सेकंड COOH ग्रुप। सो ये जो है ये हमारा दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो बोथ ईस्टर का जो कन्वर्जन, इफ यू डू हाइड्रोलिसिस, इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो तैयार होता है, फॉर्म होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है। As soon as this carboxylic acid is to be formed, one thing you can remember here, anyone if you have a same property, जैसे कि आपके घर में भी अगर दोनों बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं, दोनों भी बच्चे की जो बिहेवियर है वो अगर सिमिलर है, तो वो जो है झगड़ा जो है कायम रहेगा। तो उसके लिए उनके पिताजी माताजी क्या करते हैं, एक को जो है वहां से उठा के दूसरे कोने में पटक देते हैं, हाँ, ताकि वो झगड़ा जो है रुक जाए। ऐसे ही हमारे जैसा ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर है, वैसे ही ये जो दो COH ग्रुप है, ये दोनों COH ग्रुप दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन। जैसे कि जंगल में एक ही शेर रहता है, वैसा ही है। जैसे कि ये जो दोनों COH ग्रुप है, ये दोनों COH ग्रुप both are located on a same carbon, so it is not stable. If you slight hit, इसको अगर थोड़ा सा भी हिट दी, जैसे भी दोनों झगड़े करने वाले को थोड़ा सा भी हमने क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमने इसको उसके बारे में एक दो शब्द बताया, चालू हो जाते हैं, बराबर है। वैसे ही इसको हमने थोड़ी सी अगर हीट दी, सो व्हाट हैपन, आउट ऑफ दैट 2 COH ग्रुप, 1 COH ग्रुप रिमूव एज अ CO2। यहाँ पे जो दोनों COH ग्रुप है, तो हमको इसको स्टेबल करने के लिए इसमें का एक जो है एक COH ग्रुप जो है वो इलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। यहाँ पे अगर ये CO2 निकल गया तो बाकी क्या रहेगा, ये देखो R है, ये है R, ये है CH और ये दूसरा H है। सो RCH2 and this is a COOH and this is a COOH. So here you will get the alkyl acetic acid. So here ये जो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है alkyl acetic acid. So I will recap again. ये जो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ये जो है OC2H5 माइनस जो है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो यहाँ का प्रोटॉन निकल लेता है। सो यहाँ पर प्रोटॉन लेने के बाद में ये जो कार्बन है, सो कार्बन एक्वायर एज अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपको दिख रहा होगा, ये जो कार्बन है, सो नाउ दैट कार्बन जस्ट एक्वायर एज अ व्हाट वी कैन से नेगेटिव चार्ज एंड देन दे रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड। यहाँ पे जो है ये अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट होता है। सिंपल, दिस प्रोटॉन इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ अल्किल ग्रुप एंड एज यू नो आफ्टर दैट इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ये जो COH ग्रुप जो है, ईस्टर ग्रुप जो है, ईस्टर का कन्वर्जन जो है COOH में हो जाता है। As you know, both COH group they are present on same carbon. If you hit it slide, then one CO2 is a loss in the form, one carbon loss in the form of CO2, and there is a formation of a alkyl acetic acid. In this way, we have see the synthesis of a monoalkyl acetic acid. अगर हमने यहाँ पे R की बजाय, यहाँ पे अगर हमने R लिया, इफ यू हैव टेकन R की जगह पे अगर हमने यहाँ पे CH3 अगर लिया है, R की जगह पे अगर हम CH3 लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने R की जगह CH3 अगर लिया है, तो व्हाट यू विल गेट अ प्रोडक्ट, CH3 CH2
COOH। तो इसका नाम क्या है? दिस कंटेन 1 2 3 कार्बन, so it contain 3 carbon, so this is nothing but a propanonic acid। अगर आपको बोला it is not given as a synthesis of a alkyl acetic acid from a malonic ester, if it is not, ऐसे अगर पूछा जाए तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं। अगर आपको पूछा गया so you can prepare कौन सा? प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम अ malonic ester। अगर प्रोपेनोइक एसिड अगर आपको पूछा जाता है सो यू डोंट कंफ्यूज, सो सिंपल इन प्रोपेनोइक एसिड R की जगह आपको क्या करना है? सो जस्ट यू वांट टू यूज और यू वांट टू व्हाट वी कैन से यू वांट टू यूज R की जगह पे आपको CSP जो ग्रुप है, ये CSP ग्रुप जो है हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। अगला जो लेक्चर है उसमें हम सिंथेसिस ऑफ अ डायल्किल एसिटिक एसिड जो है वो देखेंगे हम। ओके, सो आई थिंक वी वांट टू स्टॉप हियर।